Greetings students. In the previous module we discussed about the law of conservation of mass. So according to that law, mass can neither be created nor be destroyed, or in a chemical reaction the total mass of reactant is always equal to total mass of product in a chemical reaction. So we will use this statement of law of conservation of mass to solve these two numericals. So these are simpler ones, you just have to check whether the mass is same or not. So we will start with the first question, that is the NCERT in-text question. So question is simple, but the main thing is how to write the answer. So first is we will read the statement कि in a reaction. So we have already discussed कि reaction में क्या क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज reactant, सेकंड इज प्रोडक्ट. जो रिएक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. और जो रिएक्शन होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. So first we will find out what are the reactants and what are the products and write in the form of chemical reaction. So in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate react with the 6 gram of ethanoic acid. तो पहली लाइन से हमको रिएक्टेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ. तो वी विल राइट इट सोडियम कार्बोनेट. इफ यू डोंट नो द सिंबल, डोंट राइट इट. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर फॉर्म, मी यूज द पोस्ट. तो सोडियम कार्बोनेट react with the ethanoic acid. The product were 2.2 gram of carbon dioxide. जो प्रोडक्ट बने हैं वो क्या है, all of you are aware about the formula of carbon dioxide, but don't use this. If you are writing in the word form, always write everything in word form. Carbon dioxide plus water. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है. एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर what is law of conservation of mass. Total mass of reactant is equal to total mass of product. So first we have to write the masses of these reactants and products. So before writing the masses of reactant and product, I am writing this reaction in the form of chemical symbols. If you don't know about the chemical symbols, don't write. You can write in this form, word form: sodium carbonate, ethanoic acid, sodium ethanoate, carbon dioxide plus water. This is sufficient for this question. If it is specifically asked to write the symbols of formula, then you have to write. You will be familiar with these formulas at the end of this chapter. So first is sodium carbonate, Na2CO3, ethanoic acid, CH3COS. If you want to write, you can write in the form of note. Ethanoic acid is also called acetic acid, and this acetic acid is the main component of vinegar, जिसको हम सिरका बुलाते हैं. उसके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट होता है दैट इज इथेनोइक एसिड, एंड द अदर नेम और जनरल नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड. और वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर. कितने परसेंट में, 5 to 6%. सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए नोट. तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड विल फॉर्म सोडियम इथेनोएट, CH3CONA, carbon dioxide plus water. These formulas you are already aware, carbon dioxide and water. Now we will write the masses of each ingredient. In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate. So under sodium carbonate I will write 5.3 gram reacted with the 6 gram of ethanoic acid. So ethanoic acid हमारा कितना है, 6 ग्राम. और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कितने हैं, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर. अंडर द वाटर आई विल राइट 0.9 ग्राम एंड 8.2 ग्राम ऑफ
सोडियम इथेनॉइड। तो इतना करके छोड़ नहीं देना है, वो तो क्लियरली विजिबल है। इनको आप ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो जो अमाउंट आएगा, नंबर आएगा, वो सेम आएगा। बट हाउ टू राइट आफ्टर दिस? आफ्टर दिस यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass. You have to write total mass of reactants is equal to total mass of product. After writing this point, you have to write what are the reactants? Sodium carbonate and ethanoic acid. So how you have to write? Mass of sodium carbonate plus mass of second reactant, which is ethanoic acid, is equal to total mass of product. Means you have to write in the form mass of sodium ethanoid plus mass of carbon dioxide plus mass of water. Directly नहीं करना, you have to write in a proper way. So here we will write mass of sodium carbonate 5.3 gram plus 6 is equal to mass of sodium ethanoid 8.2 gram, 2.2 gram and 0.9 gram. So when you add them, it will be 11.3 gram, 11.3 gram. After this you have to write a line. So this chemical reaction follow the law of conservation of mass. At the end you have to write a line. This hence prove it is following the law of conservation of mass. So I hope this question is clear to everyone. The main thing is how to write the answer. If you don't know this chemical equation, don't write in the word form. So first you have to find out what are reactants, कौन रिएक्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसके अंदर. तो पहली चीज आपको यही करनी है इसमें से. इफ यू कैन राइट द करेक्ट रिएक्शन, रेस्ट इज सिंपल थिंग्स दैट ऑल ऑफ यू कैन राइट. ये सिर्फ राइट करना है, वो आपको कर सकते हो आप खुद लोग. तो I hope this first numerical is clear to everyone. Now you can take the screenshot of this first one. So I will erase and solve the second numerical. So this was the first numerical. Second is, so everyone read the statement for the second numerical. We will solve in the same manner, but this is slightly different from the first one. फर्स्ट में हमको क्या करना था, वी हैव टू प्रूव दैट दिस केमिकल रिएक्शन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन सेकेंड वी विल यूज टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट. व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद द 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. वो बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, to produce 14.35 gram of silver chloride, 8.5 gram of sodium nitrate. तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो बता रहा है कि हमको ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. सो हाउ टू राइट, अगेन वी विल फॉलो द सेम पैटर्न. फर्स्ट वी विल राइट द रिएक्टेंट, देन वी विल राइट द प्रोडक्ट. सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. तो फर्स्ट रिएक्टेंट इज silver nitrate react with the 5.85 gram of sodium chloride. To produce 14.35 gram of silver chloride. So products are silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate. So these two are the products, these two are the reactants. Again I will write the symbol silver nitrate, AgNO3
sodium chloride. All of you are aware the common salt which we eat, NaCl, it will form silver chloride, AgCl, sodium, NaNO3. Now we will write their masses. So what mass of silver nitrate? तो silver nitrate का mass निकालना, तो that is unknown. Write it x gram. React with the 5.85 gram of sodium chloride. So sodium chloride is 5.85 gram to produce 14.35 gram of silver chloride. So silver chloride is 14.35 gram and 8.5 gram of sodium nitrate. So again we will write the same line. So according to the law of conservation of mass, so total mass of reactant is equal to total mass of product. So what are the reactants? And here I am writing the only symbol, mass of silver nitrate plus mass of sodium chloride. Products are mass of silver chloride plus mass of sodium nitrate. So they are already saying it is following the law of conservation of mass. So ये statement सब पे apply हो जाएगी. Now write the masses. Mass of silver nitrate that we have to calculate, x, plus mass of sodium chloride 5.85 gram, mass of silver chloride 14.35 plus 8.5. So rearrange it. X will be equal to 14.35 plus 8.5 minus 5.85. तो इसको आप सोल्व कर सकते हो. So that will be 14.35 plus it will be 22.85 minus 5.85, it will be 17.0 gram. So I hope how I have solved this question is clear to everyone. First write the chemical reaction, silver nitrate, sodium chloride, silver chloride plus silver nitrate. Then I have written the symbols. Then you have to write their masses. Then write the statement according to the law of conservation of mass. Total mass of reactant is equal to total mass of products. Mass of silver nitrate, mass of sodium chloride is equal to mass of silver chloride plus mass of sodium nitrate. So you can solve the value for the x by using the law of conservation of mass. So generally these two types of questions come from the law of conservation of mass. So I hope these two numericals are clear to everyone. If you still have any doubt, you can write in the comment section. Now you can take the screenshot for the solution of second numerical. So thank you students.